Just for real. जस्ट पढ़ लो। अब्दुल्ला के आपने पेपर में क्वेश्चन नहीं भेजे, अब उसकी क्लास है। सामने मुझे सर आप ना अब्दुल्ला को ही कह दो, वहाँ पर जाके मैं वापस पढ़ लेंगी, अब आपको अब्दुल्ला को कहना पड़ना। अब्दुल्ला किधर है? उसको कह दे अगर पास है आपके। मेरे पास नहीं है, कंप्यूटर ले रहा है। हाँ कर दो। मैं उसको मैसेज करता हूँ। हाँ शेयर हो रहा अब। Next is question number. Uh, कर लिया। so question number 26, A part. State the Newton's second law of motion. Resultant force is equal to the rate of change of momentum. Very good. And four, rate of resultant force, rate of change is equal to rate of momentum. The resultant force is proportional to the rate of change. Marking scheme में जरा देखेंगे. मार्किंग स्कीम में तो इक्वल रिजल्टेंट बहुत कुछ लगा हुआ था। They say proportional slash equal to slash. Okay, that. So next is question number B part. A car of mass 850 kg tows a trailer in a straight line along a horizontal road as shown in the figure. The car and the trailer are connected by a horizontal tow bar. The variation velocity v of the car for a part of its 2. Okay. Next is this is a velocity time graph for the car. Calculate the distance traveled by the car from 0 to 10. Just 0 to 10. तो आपने कर लिया. हाँ जी 1/2 multiplied by 9 plus 13 multiplied by 10. हाँ. So area under the graph, the distance area under time graph, which is area of trapezium. It's 9 minus 8 is 1 plus 13 minus 8 करेंगे ना हम. 13 minus 8 कितना हो जाएगा? ओ जस्ट ये हमारे फाइनल्स हमने 9 ही लिया. Was the ना actual speed. And next important into the distance between them is 10. The answer is 110. 110. So 110 meter is में आपने
लेंथ नहीं लेनी, इसमें आपने देखना है व्हाट्स द इनिशियल हाँ फाइनल। जी। Next is at time t equals 10 seconds, the resistive force acting on the card, the air resistance and friction is 510. The tension in the tau bar is 440. Tension, the friction is 510 at 10 seconds. For the car at 10 seconds, calculate the acceleration. जी acceleration कैसे find करेंगे? The Gradient gradient लिया आपने, 13 minus 9 divided by 10. ये तो आसान है. The gradient of speed time graph is, तो आपने रखा 13 minus 10 by 10. 13 minus 9 13 minus divided by 10. minus divided by. Okay. Next check Equal करें. to 0.40. 0.40. Yeah. Use your answer to calculate the resultant force acting on the car. F equals to MA. Equals mass दिया हुआ था. 850. 0.40. The answer is 40. Hmm. 340 Newton. Next is, ये वाला नहीं हो रहा. so that the horizontal force of, that the horizontal force of 1300 Newton is exerted on the car by its engine. Horizontal force. Horizontal force आपके पास, how many forces are acting on the car? एक तो फोर्स हमें पता है 40 प्लस, Hmm. और कौन सी फोर्स लग रही है? Engine. हाँ जी, due to air resistance the force is 510 and the tension is 440. 510 440 को ऐड Plus 1300 बन रहा है. 1290. So the 1300. Yeah. 129, 0. बस फोर्सेस को ऐड अप करनी है. yes. बस. हाँ जी, तो क्यों ऐड अप कर रहे हैं? बिकॉज इट इज मूविंग और विद कांस्टेंट, हाँ जी. एंड whenever the object is moving with a constant, the forward forces and backward Equal to forces the are backward equal. equal. तो ये इसलिए बात मैंने 510 को ऐड ही किया. ठीक है. Next is, determine the useful output power of the engine. ये भी Useful नहीं हो रहा. power output. The इसका formula, फॉर्मूला क्या करेंगे? अभी हमने पावर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा था ना? Now sir, I don't know. किया नहीं किया. आई थिंक हमने I don't डायनामिक्स see तक डायनामिक्स तक पावर ही. किया हुआ है. ठीक है. पावर इक्वल्स फोर्स इनटू वेलोसिटी भी एक फॉर्मूला होता है. ये तो तो पता. द फोर्स इज 1300 बस भी कांस्टेंट नहीं है. and the मेंशन speed is constant which is at 10 second. स्पीड आपने चेक करनी है 13. at 10 second. क्या है स्पीड 10 second पे? 13. 13 कर लें. बस. ये तो ज़्यादा आसान नहीं बनाया ये क्वेश्चन. फ्री में मार्क्स दे रहे. 16900. 16 आंसर चेक करेंगी आप? 1.7 This कर देता हूँ. 26. 1 2 1 2 पावर 1.7 10 पावर 4 10 पावर 4 watt. ये गलत मार्क्स क्यों बोल रही हूँ? 26 last 1.7 multiplied of half. ये. Next is question number 27. देखिए मैंने आपको डायनामिक्स माशाल्लाह.
अब हम पहुंच गए मई जून 19। A block X slide along a horizontal frictionless surface towards a block Y as illustrated in figure. So the one block is at rest, its initial speed is. Next is there are no resistive forces acting on the block X as it moves towards Y. At time t equals 0, block X has momentum. The moment X for a short time later, the block glides and separate. The variation with momentum of the block Y is shown in figure. This is the change in the momentum of the block Y. So initially up to 60 second, the momentum is zero. And then it means here at a 60 second, they collide with the block X. There is a sudden change in momentum. So and then in the momentum comes constant. So it means they start moving with a define linear momentum. तीसरा मुझे ये नहीं आता आता था, हमने मार्क्स में खोल कर देखा, उसने बोला mass multiply with velocity. हाँ तो linear momentum क्या होता है? The product of Mass and velocity. हाँ Yes. product mass velocity, यही तो लिखते हैं हम, the product of mass momentum. Next figure, use figure 2.2 to determine the time interval over which the blocks are in contact with. कौन सा टाइम है? 100 minus 60. 100. You know, just slanted line है ना, क्योंकि उस वक्त फिर हाँ टक्कर टक्कर होया. तो 100 minus 6, 100 minus comes 40 milliseconds. Again. No sir. Next is describe without calculation the magnitude of the acceleration of block Y from t 80 millisecond 80 millisecond to 100. 80 to 100 क्या हो रहा है? 80 to 100. इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? Constant. फोर्स 80 इक्वल्स to 100 ना, ये डेल्टा टी constant और पूरे डेल्टा लिंक टी. होगा. हाँ तो Constant कहेंगे acceleration है. if the gradient is constant, force is constant, and when force is constant, so acceleration is also constant. Constant. यहाँ पे हम from 80 to 100 millisecond, the magnitude of acceleration Constant. magnitude of acceleration constant because the force is constant. Next, from 100 to 120 millisecond, Zero. 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 Because the gradient is Straight line. zero, force is zero. Zero. So magnitude of acceleration, magnitude of magnitude of acceleration. Next, use figure 2.2. Determine the magnitude of the force exerted by block X on block Y. Magnitude of force exerted by X मैंने ये on क्वेश्चन Y. किया, बट मेरी आंसर 0.013 आया.
जबकि आंसर 3 है। फिगर यूज करनी है, फिगर से फोर्स निकालनी है, सो ग्रेडियंट ले लेते हैं ना। हाँ तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट चेक कर, y2 0.5 माइनस 2 हम्म एंड x2 100 minus 60 100 minus 6 40 and is millisecond, ऐसे लिखते हैं, uh, ऐसे लिखते हैं 100 minus 60 become 40 and the milli is 10 power minus सी ये गलती हुई। एक बिल्कुल ही कौन सी पावर लेनी है? कम रखें, 5 डिवाइडेड minus बाय 40 10 power मतलब ओके 12.5 आंसर क्या है इसका? 13 0.5 13 लिख मेरे ना next 0.013 आया ना। because we didn't take the 10 power minus. 10 3 यस यस ये गलती। Okay, next is on figure 2.2. Sketch the variation of the momentum of block X with time t from 0 to 160 millisecond. From 0 to अच्छा अब हमने 160 X का sketch करना है। उल्टा नहीं ये हमने पहले भी किया। उल्टा तो उसका मोमेंटम शुरू में कितना था? ये लिखा हुआ। The initial momentum of X is 0.4, तो हम 60 तक तो 0.4 याद किया। हाँ जी और अब हमें क्या पता कि फाइनल क्या होगा उसका? 0 नहीं होगा। कहाँ से? We didn't know the final momentum of X. So first we have to calculate the final moment. So we know that the change होता है final momentum minus इनिशियल initial. So change in the moment उसके opposite होगा ना। देखें, the change in momentum of Y is 0.5 था ना, यार इसका 0.5 है तो इसका क्या होगा? माइनस 0.5 opposite direction में। हाँ जी और when they collide, so their momentum will be so minus 0.5 0. Didn't know the final momentum minus the initial momentum is 0. अच्छा अब ऐसा करते हैं, the final momentum is minus 0.50 plus 0.40. 0.9 माइनस में हाँ जी, माइनस माइनस 0. 1 माइनस 0.1, 1 तो इसका मतलब 100 सेकंड पे ना ये बनेगा, ऐसे लेके जानी है लाइन। 0.1 देन स्ट्रेट हो जाएगा क्या? And ठीक है। how we know that the final momentum is 0.1? Or this is the important point कि you should have to take, because when they collide initially x is moving towards right, y is at left. So if the y start moving in this direction after the collision,
After the collision, y starts moving towards right, let's suppose. So they must have to move the opposite direction. ठीक है? Any confusion? नो सर, नेक्स्ट आ जाता है ये वाला बिल्कुल नहीं हुआ। लिखना भी नहीं 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 नहीं, मैं बाद में, आप मुझे सब कुछ सेंड करके पे करेंगी। ये 28 नहीं हुआ। 28 नहीं हुआ। सी मुझे ये डायग्राम ही नहीं समझ आई, बात बस आपने ये। डायग्राम देख के कहा होगा और जी सर। two balls x and y move along a horizontal frictionless surface as x and y. Okay. Next ball x has velocity per second in a direction along line AB. Ball y has a mass of 2.5 kg and initial velocity of 9.6 meter per second. All the things are in a direction at an angle of 60 degree to the line AB. Two balls collide at point B. The balls stick together and then balls together and then travel along the horizontal surface in a direction at right angle to the line A. By considering the component of momentum in the direction from क्या लिखा हुआ है from एट A to B, ball X has a mass 4 kg. 4 Okay, तो अब हम क्या करें? Momentum along x-axis ऐसे कर x वाला तो हॉरिजॉन्टली एंड देयर कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट y का ये बनेगा बच्चे और एक कंपोनेंट हमारे पास y का ये बन जाए ठीक है ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास ये एंगल 6 तो ये भी 6 90 का। नो नो, इट्स 30 60 प्लस 90 माइनस 180। हाँ टोटल इज 180 हम्म, तो 1 इज और जो बाहर जो एंगल बन रहा है आउटर एंगल 90। 90 90 प्लस 60 कितना हो जाता है 150 180 minus x equals 30 okay ठीक है। so opposite to the theta we have 9.6 mass mass कितना है 2.5 चले 2.5 is 9.6 and sine 30 degree along x-axis है ना now we have to the direction from A to B x-axis हमने इसको solve कर along x-axis तो मुझे बताएं x एक्सिस पे द मोमेंटम ऑफ x क्या होगा मोमेंटम ऑफ x इज 3 mass of x into ओ एम वी velocity of x 3 velocity of x is 3 plus but minus because इसका ऑपोजिट ऑपोजिट है गुड ये हम लिखेंगे 9 क्या था उसकी velocity mass sorry mass is 9.6। 0.5 यस, 9.6 sin ठीक था ना and ये नीचे after the collision, they are not moving along x-axis. They are moving along y-axis. Their 0। momentum along x-axis. Check करें 3x point 6 m 4 5
6, 4 30 divided by 3 equal is to 4. 4. Next is calculate the common velocity. Common velocity मतलब combined Common velocity. U1. हाँ जी. Speed v of the two balls after the collision. Now after the collision हम क्या करेंगे? हम along y-axis ले लेते हैं. Because after the collision they are moving along y-axis. देखते हैं along y-axis. तो मुझे x वाला तो मूवीज जो x वाली बॉल है ना, it is moving along x-axis. So their But momentum with along 0 y in is the 0. And the plus second one is 2.5 mm, to cos 9.6 9 point cos. cos 30 लेंगे अब, because their Yeah. y component is cos Huh. 30 equals to their combined mass becomes 2.4 plus 4 in b. अब b check कर लो. Answer divided by 2.5 plus 4. 3.1976. 0.1976. 7. 19 कितना बनेगा? 3.2. 3.2. Remember the difference between uh, determine the difference between the initial kinetic energy of ball x and initial kinetic energy of ball y. डिफरेंस निकालना है. अच्छा, तो पहले हम निकालते हैं initial kinetic energy of x, that is half 102. m v square. चेक करें क्या होता है. 0.5 plus 4 square, no. By 3 square. That is 18. 18. And kinetic energy of y is half m. M is 2.5 था, and their initial velocity is 6 square. So the answer is 115.2. 115.2 joules. Now we have to find the difference. 115.2 minus 97.2. ठीक है, तो क्या आंसर लिखा हुआ है? 97. Question mark 28C. 97. Okay. Next question number 29. State the principle of conservation of momentum. So In for okay. for an isolated Closed isolated. system, sum of total momentum total momentum Before before interaction or interaction is equal to the is equal sum of total momentum after interaction after closure. Any confusion? no sir. Next, पढ़ें जरा आप आहिस्ता आहिस्ता. Deep
propulsion system of a toy car consists of a propeller attached to an electric motor as illustrated in Fig 3.1. The car is on a horizontal ground and is initially held at rest by its brakes. When the motor is switched on, it rotates the propeller so that the air is propelled horizontally to the left. The density of the air is 1.3 kg meter per cube. Assume that the Assume that the air moves with a speed of 1.8 meter per second in a uniform cylinder of radius 0.045. Also assume that the air to the right of the propeller is stationary. Show that in a time interval of 2 seconds, the mass of air propelled to the left is 0.030. So we have electric motor car, the propeller क्या कर रहा है? The air, the moving of this, and this is the क्या कहेंगे diameter of this cylinder. Next is the car is on horizontal ground and be held at rest. Initial speed is zero. When the motor is switched on, it rotates propeller. So the density भी given है, given the radius of अच्छा it's not a rectangle, it's of radius this. So if this one is the radius, know that we have to add, so comes diameter. Time is given, mass. So that in a time, the mass of the propel, we have to prove that the mass of air propelled to left is this. तो हमने air का mass निकालना है ये बचे so this is important. हम ऐसे करते हैं यहाँ पे because density is given, so density equals mass, so mass density multiply by the volume, and the volume of cylinder is, and the volume of cylinder is pi Well, r square h. density to 1.3. Density is 1.3. And what about the volume of cylinder? The volume of cylinder is pi Radius or something. r square in h होता है. Now mass density 0.3 as it is, radius is 0.05 square, height क्या होगी? ये बच्चे Caesar, I 0.045 को प्लस करो. what's the height? Height is this one. How much the distance covered by the, अच्छा ऐसे करते हैं Speed equals to distance by time कर लो. distance equals time ना. Yeah. So for 1 second is 1.8. So in a time interval of 2 seconds, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं हाँ? Hmm. In a time interval of 2 seconds, 3.6. क्या आ रहा है? 3.6. 2.6. 3333. Yes. तो हम लिखें, चेक करो जरा, डाउट ही पड़ रहा है मुझे. 1.3 pi r square and distance. 0.02977. 0.02977. 0. ये आ रहा है. Yes. तो
0.0. 030. Hmm. ठीक है सही. Next is calculate the increase in momentum of the mass of air in increase या change in momentum is m minus q. Now change in momentum mass is 0.03. Final velocity is 1.8 and car is at rest. Okay. Oh, 1.8. That is 0.054. 5. The force exerted on this mass by sorry force exerted on this mass of air by the propeller by the propeller. I mean how is exerted by the propeller. हाँ ऐसे करते हैं F equals MA delta P. over delta T. Change in momentum is 0.4 over 2. F is equals to ma कहाँ से. सर निकलता है वो used to हूँ मैं. हाँ वो भी कर सकते हैं माइनस यू ओवर टी कर दें आप. No सर ये ज़्यादा आसान है. 0.027. 0.2. Explain how Newton third law applies to the movement of air by a propeller. वही होगा air also क्या कहते हैं air also exert 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 a same force exert a same force of 0.027 Newton applies to the movement of by the air also exert a same force of 0.027 Newton on on propeller but opposite Direction. opposite direction. Next is the total mass of the car is this. The brakes of and the car begins to move with an initial acceleration is given. Determine the initial frictional force acting on the car. Frictional force. तो कौन सा यूज करना चाहिए. अब नहीं बताओगी हाँ. अब तो नहीं बताएंगी सर. F equals ma. वो सर जब मैंने ये बता दिया ना फिर ही इस्तेमाल होता है ये हाँ फॉर्मूला. हाँ देख मुझे लिया मैं. लगा था. तो here we have to take a net force. Net force is forward force. The forward force is कितनी थी 0.027 हम्म. minus backward force is the frictional force we didn't know and mass तो acceleration 0.075 चेक करो क्या. 0.2. I. सर पर जो 0.027 है उधर जाके फिर माइनस होंगे ना. प्लस नहीं होगा माइनस कर दो चलो. So here you have minus f on this side माइनस 0.012. 0.2 हाँ minus फिर minus cancel माइनस कर. 0.0 न्यूटन. ठीक है ठीक है. काफी है. हाँ जी सर. ओके काफिस. अल्लाह हाफिज़ सर.